अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग एक मटन रेसिपी बना रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम है, बहुत ही मज़े का आइटम है, मटन मसाला ग्रेवी। जी हाँ, इसी रेसिपी को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से आज बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं नवाब्स किचन के स्टाइल में कैसे बनाते हैं। आज हम लोग मटन मसाला ग्रेवी बना रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम है और टेस्टी आइटम है। पहले हम लोग मटन में थोड़े इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। उससे पहले हम लोग बॉल में मटन ऐड करेंगे। इसी में हम लोग स्लाइस्ड ऑनियंस भी ऐड करेंगे। ऑनियंस ऐड करे बाद इसमें हम लोग टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट भी ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग कोरिएंडर पाउडर भी डालेंगे। इन सारे स्पाइसेस ऐड करे बाद हम लोग स्लाइस्ड ग्रीन चिली ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मीट को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद स्टोव पे चढ़ाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करे बाद इसको हम लोग 10 मिनट तक पकाए बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह बॉईल करेंगे। सारा गोश्त परफेक्टली बॉईल हो गया है।
इसी वक्त इसको स्टोव पे से अलग करेंगे और इसी चूल्हे पे दूसरा बाउल लेंगे। अब हम लोग रेसिपी का मेन प्रोसेस शुरू करेंगे। बॉल गरम हो गया है, इसी में हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। इसी में हम लोग ऑनियन पेस्ट ऐड करेंगे। ऑनियन पेस्ट के साथ साथ हम लोग इसमें स्लाइस्ड ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिंजर गार्लिक पेस्ट। ऑनियन पेस्ट ब्राउन शेड में बदलते ही हम लोग इसमें टमाटो प्यूरी भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट भी ऐड करेंगे। इस प्रोसेस के बाद जो पहले ही हम लोग बॉईल करके रखे थे मीट, उसके शेरवे के साथ इसमें ऐड कर देंगे। इसी वक्त हम लोग इसमें मीट मसाला भी ऐड करेंगे। मीट को इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह 10 मिनट तक पकाएंगे, लिड क्लोज करके। माशाल्लाह रेसिपी बहुत ही बढ़िया बना है। इसको और भी मज़े का बनाने के लिए हम लोग इसमें चॉप्ड कोरिएंडर ऐड करेंगे। माशाअल्लाह बहुत ही मज़े का लग रहा है। इसी को हम लोग राइस के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते, लेकिन आज हम लोग बच्चों को राइस के साथ सर्व करेंगे।
आज का ये रेसिपी देख के आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और एक ख़ास बात, मुझसे डायरेक्टली बात करने के लिए NAWABS_kitchen 786 पे फॉलो करिए। मैं डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट होऊंगा। और एक ख़ास बात, हमारी टीम से बात करने के लिए या हमारे टीम को कांटेक्ट करने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए। हम लोग आसानी से आप तक पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।